क्वेश्चन नंबर 20, जेग लिमिटेड ग्रुप। जेग लिमिटेड ग्रुप क्या बोलता है? देखो यहाँ पे है ना, कुछ कुछ ऐसे मुश्किल सम्स हैं 10-10 मार्क के। हम पहले जेनरिक क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज द स्ट्रेटेजी टू गो एड विथ। ठीक है ना? पहला, प्रिपेयर मेमोरेंडम please prepare a memorandum for the client file consisting of the work set out below. Becoming tax advisors to JEG Limited group of companies. Set out the information we require and the actions we should take before we agree to become tax advisors to JEG Limited group of companies. ये 5 मार्क का है। ठीक है। एग्जिबिट 1 इन्होंने इन्होंने कुछ तो दिया हुआ है। Change the whole of the ordinary share purchase of the business limited। ये देखो। I expect that JEG Limited Group to be an exciting new client for our firm. Hale has ambitious plans, and although we advise a number of corporate groups, this will give us for our first experience of companies operating through permanent establishment situated overseas. I can confirm there is no double tax treaty between UK and either the country of Silana or the country of Puran। ये सब जाने दो, ये सब बाद में आएगा। But yeah, we should be honest with them that this is our first experience dealing with such a permanent establishment client वगैरह। So first of all, we should obtain the address of the firm, the number of directors which are operating it, the आइडेंटिटी ऑफ इनकॉर्पोरेट नहीं, मतलब द इनकॉर्पोरेशन का ये सर्टिफिकेट ऑफ द फर्म। ठीक है, ये सब हम सब वो सबसे पहले मांगेंगे। देन वी शुड ऑब्टेन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बोल दिया। द वी शुड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर ऑपरेटिंग इन द फर्म एंड द आइडेंटिटी ऑफ दोज डायरेक्टर्स, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ दोज ये directors। We should be as honest with them as possible regarding the fact that this is our first permanent establishment, मतलब sorry, this is the first experience that we will be having of companies operating the permanent establishment situated overseas, and therefore we might not नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, ये नहीं बोल सकते। बट वी डू नॉट हैव एक्सपीरियंस इन सच वर्क। Informing them about the fact that we have no experience is a fundamental principle of professional behavior and professional competence and due care which we as ACCA professionals must follow। हाँ, फिर अपन स्टार्टिंग में ही उस आंसर के पहले ये बोल देंगे कि as ACCA professionals we should follow the fundamental principles which are set out, और फिर वो 5 fundamental principles बता देंगे। आई थिंक इतना चलेगा, आई थिंक आंसर। ये तो आंसर भी है सीधा। और FCSPD बराबर है। हाँ, ये देखो। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन नॉट इनकॉर्पोरेट, मतलब ठीक है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी ठीक ही है। And primary business and registered office of each company in the group, the group structure, directors and shareholders of the company, the identities of those persons instructing the firm on behalf of the company and those persons who are authorized to do so। Actions to take, we must consider the fundamental principles of professional ethics as set out in the professional code of ethics and conduct। This requires us to consider whether becoming tax advisors to JEG Limited Group would create any threats to compliance with these principles। In order to comply with the principle of professional competence and due care, we have an obligation to ensure that our clients receive competent and professional advice। As we have no experience of UK resident companies trading through permanent establishments situated overseas, we must obtain a thorough understanding of the relevant technical issues before we provide advice on these matters to the JEG Limited group of companies। We must assure ourselves that the companies are not involved in any form of money laundering। ठीक है।
we should obtain permission to contact group's existing tax advisors in order to ensure that there is nothing in the past which would preclude us from accepting the appointment on ethical grounds. ठीक है. ओके ओके, हाँ ये वाला पॉइंट हमने नहीं बोला कि हमको वी शुड take permission to contact their existing tax advisors to understand whether there is any information that would induce our part of becoming their tax advisors. राइट राइट. ये एक पॉइंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी कौन सा क्वेश्चन पहले करें? मैं तो बोलता हूँ पहले वैट कर लेते हैं, आई फील. ठीक है. ये एक्चुअली जेनरिक आंसर तो है ये वैसे वैट का, दिखने में तो ऊपर ऊपर से है. एग्जिबिट 2 है ये है. ठीक है. नहीं, एक्चुअली मेरे को सी भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. सी इज ऑल्सो गुड. वीडियो रोल ओवर जाने दो. पहले मैं तो यही करते वैल्यू एडेड टैक्स. आई हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश दैट लिस्ट कंपनी कैनॉट बी इंक्लूडेड विद इन द वैट ग्रुप रजिस्ट्रेशन विद जेग लिमिटेड. विद दिस इन माइंड एक्सप्लेन विच ऑफ द अदर कंपनीज विद इन द ग्रुप कुड बी इंक्लूडेड विद इन अ ग्रुप रजिस्ट्रेशन और ग्रुप वैट रजिस्ट्रेशन. तो अपन ये बता देंगे कि कंपनीज विच कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द और कंपनीज दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप वैट रजिस्ट्रेशन आर. पहली बात तो कौन सी कंपनी आ सकती है भाई ग्रुप एड रजिस्ट्रेशन में? द कंपनीज विच हैव विच जेक लिमिटेड हैज होल्डिंग ऑफ मोर देन 50%, वो एक आ सकती है कंपनीज ग्रुप एड रजिस्ट्रेशन में. फिर और कौन सी कंपनीज आ सकती है? कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड इन द यूके और हैव प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस एज यूके, वो एक आ सकती है. ठीक है. तो वो एक अपन 2 पॉइंट्स पहले तो बोल देंगे. एनी पोटेंशियल एडवांटेजेस रेलेवेंट टू जेग लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑफ रजिस्टरिंग फॉर वैट एज अ ग्रुप. तो ये पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस. ओके ओके, वेट वेट वेट. And the VAT implications for JEG limit of purchasing components from list company. Okay. So पहली बात तो list company cannot be included in the VAT group. So therefore, मतलब we have to claim, we can claim purchase VAT, मतलब input VAT that we will be charging from list company, ऐसा. ठीक है ना, दैट वी कैन क्लेम. डिसएडवांटेज तो ये है कि फॉर वन कम की पहली बात तो ऑल ऑफ द कंपनीज will be selecting one company in the group. All companies in the group will be selecting one company in the group as a company who would be required to submit VAT returns and do payment of VAT returns on time. Because of which, for that one company, the administrative costs and the administration would become more complex. ठीक है ना. If one company in the group is late in submitting the return on time or is late in submitting the information to the selected VAT submitting company on time, then that will lead to penalties which would be faced. ठीक है ना. अब अभी इनका अपन एग्जिबिट पढ़ लेते हैं. ये तो अब अभी अपन ने जनरल आंसर दे दिया. पॉसिबिलिटी ऑफ वैट रजिस्ट्रेशन. और क्या बोल सकते हैं? हाँ ये देखो, अभी ऐसे इधर उन्होंने दिया हुआ है कि कौन सी कंपनीज आ सकती है, उन्होंने पूछा है ना. तो देखो हम लोगों ने ये बिल्कुल सही बोला था. सो देयर फोर, बिकॉज वो कि प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए यूके या फिर इनकॉर्पोरेशन यूके होना चाहिए. तो फिर ये देखो, कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑफ जैक कॉर्ड एंड मॉट लिमिटेड इज यूके and therefore all of them would be included in the VAT registration group. ठीक है ना. Even though the country of trading activity of mod is in Puran, but still the company's residence is of UK, and then that's why it should be included within the group. ठीक है ना. अब बाकी तो कहीं ऐसे कुछ लग नहीं रहा है. परचेज ऑफ कॉम्पोनेंट्स उन्होंने कुछ तो बोला है, वो अपन जरा आ जाते हैं. हाँ ये देखो,
लिस्ट कंपनी का ये देखो, ऑन 1st of July 2025, लिस्ट purchased a building situated in Silana for 1,70,000. This building was immediately brought into use in list company's trade. List company manufactures industrial components which it supplies to customers in Silana and in other countries. It is intended that JEG Limited will purchase components from list company and import them for use in its own manufacturing trade. In view of the low rate of business tax in Silana, I am considering pricing strategies which would maximize the profits of the group which are taxed there. यार थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पे। तो देखो, लिस्ट कंपनी मैन्युफैक्चर, तो अपन ये वाला लाइन पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। सो देयर फोर एज जेग लिमिटेड विल बी क्या बोलते हैं, परचेसिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम फ्रॉम लिस्ट कंपनी विच एक मिनट, विच इज सिचुएटेड इन इन सिलाना, इट विल बी इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड, ठीक है ना। And sorry, and therefore what VAT percentage is there in Silana is irrelevant because JEG Limited would be claiming input tax at the rate of 20% only. Now the importation leads to a tax neutral effect, because of which output tax will be required to be claimed of equal amount. This would lead to a neutral effect, ठीक है, ये अपन बता देंगे। नहीं, ये अपन ने बता दिया, देख ये अपन ने बिल्कुल सही बताया। ये भी मतलब बराबरी बताया, ग्रुप वाइड रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर आई थिंक टैक्सेबल सप्लाईज का भी आना चाहिए। द कंपनी विच मेक्स वो टैक्सेबल मतलब सप्लाईज, दैट विल बी इंक्लूड इन द वैट रजिस्ट्रेशन ग्रुप। द कंपनी दैट मेक्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज, आई डोंट थिंक वो आना चाहिए। ये एक लाइन है यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। एंड लास्ट है पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस टू जेग लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये तो अपन ने बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट विल इंक्रीज फॉर दैट वन कंपनी। और क्या हो सकता है डिसएडवांटेजेस में, पेनल्टीज भी बता दिया। हम्म, हाँ, कि दैट वन कंपनी which has been selected, that would not be able to focus on its trading activities completely, as in every quarter there will be pressure of, or in every month there will be pressure of the due date of payment, and in every quarter there will be pressure of the due date of filing the return। ये अपन बोल देंगे 7 मार्क के लिए। आई थिंक इतना काफी है, 7 मार्क के लिए बहुत है। लिस्ट कंपनी, चलो। If the components were sold, एक मिनट ना, oh नहीं सॉरी, दिस इज डी क्वेश्चन, पहले एडिट एज ग्रुप वैट registration. A company can be a member of the JEG Limited group VAT registration if it is controlled by JEG Limited and JEG owns more than 50% of the company's ordinary share capital. Perfect. It is established in the UK, ठीक है, परफेक्ट। और इट हैज फिक्स्ड, हाँ एक्चुअली वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा अच्छा वर्ड है, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट इन द यूके। फॉर एग्जांपल, इट हैज अ जेन्युइन ट्रेडिंग प्रेजेंस इन द यूके। अकॉर्डिंगली कॉड कुड बी इंक्लूडेड within a group VAT registration, whereas Mott Limited could not unless it satisfies second above, ठीक है। Mott Limited satisfies second above, ठीक है। मॉट लिमिटेड नहीं आ रहा है अनलेस वो सेकंड वाला साइड से, लेकिन मॉट लिमिटेड एक्चुअली इनकॉर्पोरेट हुआ है यूके में, मतलब उसका रेसिडेंसी यूके में है, ठीक है ना। आई डोंट नो व्हाई दे पुट दिस लाइन देन, बट ठीक है। पॉसिबल डिसएडवांटेजेस, द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वैट registration are jointly and severely liable for group's VAT liability. The group where registration are jointly and severely liable for, बराबर है। Accordingly, the inclusion in the group of COD must be considered particularly carefully due to its financial problems. Okay, ये अपन ने ऊपर दिया हुआ है ये वाली लाइन। It will be necessary to obtain and collate information from the subsidiary companies in order to prepare a single VAT return, which may cause administrative difficulties. Perfect. Purchase of components from list company, JEG Limited would be required to account for output VAT at the standard rate on the VAT return covering the date of importation of the components. JEG Limited would be able to reclaim the VAT as input tax on the same VAT return. Perfect, ठीक है। चलो ये भी हो गया, तो 7 और ये
ए और डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट करें? अभी अपन लाइन से जा सकते हैं, मुझे मुझे लगता है। नहीं, लेकिन एक मिनट ना, यहाँ पे चार्जेबल गेन्स का समय है और यहाँ पे टैक्सेशन फॉर प्रॉफिट्स जनरेटेड ओवरसीज। आई थिंक ये वाला पहले कर लेते हैं 9 मार्क के लिए। ये मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। सी, लिस्ट कंपनी एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन इन रिलेशन टू यूके कॉर्पोरेशन टैक्स पेबल ऑफ लिस्ट कंपनी चार्जिंग जेग लिमिटेड इन्फ्लेटेड प्राइसेस फॉर इट्स कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स ऑफ द ग्रुप which are taxed in Silana. Okay, JEG Limited is a small enterprise for the purposes of the transfer pricing regime. Okay, okay. Not limited. Explain the rate of corporation tax which will be suffered by Mott Limited in the UK on profits generated by its permanent establishment in Puran, and the matters to consider when deciding whether or not to make an election to exempt the profits of the permanent establishment in Puran from UK tax. देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आता है। अपन पहले लिस्ट के ऊपर लेकिन जरा वो फोकस करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है बेसिकली? ऑन 1 July 2025 लिस्ट कंपनी परचेज्ड अ बिल्डिंग सिचुएटेड इन सिलाना फॉर 1,70,000। दिस बिल्डिंग वाज immediately brought into use in List's trade. Now, List company manufactures the industrial components which it supplies to customers in Silana and in other countries. It is intended that JEG Limited will purchase the components from List company and import them for the use in its own manufacturing trade. In the view of the low rate of business tax in Silana, I am considering pricing strategies which would maximize the profits of the group which are taxed there. In view of the low rate of business tax, एक second, in view of the low rate of business tax, I am considering pricing strategies which would maximize the profits of the group which are taxed there. वो जानबूझ के वहां पे प्राइसेस बढ़ा रहे हैं ना। First of all, this is an internal pricing strategy which has been applied so that less tax is being paid in UK by inflating the costs. ठीक है, by inflating the costs, and less company by increasing its sales so that tax is paid less in the country of Silana, which is at the rate of 11%. ठीक है ना? Now, being it an internal pricing transfer, an internal pricing adjustment should be made. ठीक है? The internal pricing adjustment is the fact that what is the market value of those components, and only so that price should be reflected by JEG Limited in its books of accounts. ठीक है? And once that adjustment has been made, the tax will be paid accordingly. ठीक है? And in list company as well, the transfer pricing adjustment will be made to the sales, and tax would be payable accordingly in the country of Silana. It does not matter at what prices the inflated pricing takes place, or at what मतलब inflated pricing of the components take place. But when it comes to internal pricing adjustment for the corporation tax statement, the adjustment needs to be made to the accounts. ये अपन बोल सकते हैं, मुझे लगता है ये आंसर होना चाहिए। बट पता है सीन क्या है? जेक लिमिटेड इज अ स्मॉल एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, ये उन्होंने बोला है। अगर वो स्मॉल कंपनी है ना, हाउएवर, फिर अपन ये लाइन डाल देंगे कि हाउएवर जेक लिमिटेड इज अ स्मॉल एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग रिजीम, एंड देयरफॉर इट डज नॉट नीड टू मेक एनी सच एडजस्टमेंट, बिकॉज स्मॉल एंटरप्राइज को आई थिंक नहीं होता वो, है ना, रिक्वायर्ड। आई थिंक यही होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। मॉट लिमिटेड एक्सप्लेन द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स विच विल बी सफर्ड बाय मॉट लिमिटेड इन द यूके on profit generated by its permanent establishment in Puran, and the matters to consider when deciding whether or not to make an election to exempt the profits of permanent establishment in Puran. देखो, the rate of corporation tax which is suffered by Mott in the country of UK is the additional 12%, as double taxation relief is available. ठीक है ना?
सो देयर फोर, कहाँ गया मॉट लिमिटेड, हाँ ये रहा, कैरीज आउट ट्रेड इन पुरान वेट प्रोडक्शन में, ठीक है, इट में नो कैपिटलाइजेशन डिस्पोजल, ठीक है। सो हाँ वही है कि इट इज जस्ट 12% एज डबल टैक्सेशन, मतलब वो रिलीफ इज अवेलेबल। हाँ अभी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, हाँ अभी पहली बात तो मॉट लिमिटेड हैज टू पे टैक्स इन द यूके, has to pay the corporation tax in the UK as it has been situated as a permanent establishment, and a permanent establishment is not a separate legal entity. It is just a part of the firm and is as good as a branch. ठीक है ना? uh, however there are certain uh, however there can also be elections made in order to exempt the profits of permanent establishment in the country of UK or from UK tax. However, when such elections are made, there should be certain considerations that should be considered. Or there should be certain matters that should be considered, such as the capital allowances of the group will not be available. The losses cannot be transferred between the companies anymore. That means that Mont Limited will not be able to transfer its own losses to JEG and Knot है ना दूसरी company, कॉर्ड कंपनी, एंड इवन कॉर्ड एंड जेक कैनॉट ट्रांसफर देयर ओन लॉसेस टू क्या बोलते हैं ये मॉट लिमिटेड, ठीक है। सो नेक्स्ट, प्रॉफिट्स आर एग्जेम्प्ट टू बी टैक्स, देयरफॉर नो एक्स्ट्रा टैक्स ऑफ 12% विल नीड टू बी मेड। उसके बाद एक मिनट, ये आई थिंक लैग हो रहा है थोड़ा सा। एनीवेज, हाँ दिस इलेक्शन इज इरिवोकेबल, वो अपन बोल देंगे कि दिस इलेक्शन इज इरिवोकेबल एंड विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द फ्यूचर पीस, ये अपन बोल सकते हैं पॉइंट। हो गया वो ठीक हो गया वो। चलो अच्छा अभी ये चेक करते हैं। इफ components were sold by list company to JEG at an inflated price, JEG would have lower profits and would therefore have a lower corporation tax liability। हाँ पहले अपने को ये सेटअप करके देना चाहिए था यार, ये सीधा आंसर पे नहीं जाना चाहिए था एक्चुअली। Than it would have done if it had purchased the components from an unrelated company. It would therefore have gained a tax advantage in the UK as a result of artificial pricing. A transfer pricing adjustment would be required. This is because a UK tax advantage would arise on a transaction between JEG Limited and a company which it controls, and this company is resident in a non-qualifying territory. एक मिनट, ट्रांजेक्शन बिटवीन जेग, ठीक है, this is a resident in a non-qualifying territory, that is a territory which does not have a double tax agreement with UK which contains a non-discrimination article, ठीक है। Therefore a transfer price regime applies despite JEG being a small company, ठीक है। तो वो स्मॉल कंपनी का कुछ पॉइंट ही नहीं था, वो जानबूझ के वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। A trading profit of JEG Limited must be increased by excess of the inflated prices over the arm's length price. The higher profit would therefore increase JEG Limited's corporation tax payable, ठीक है ना। अभी ये देखो, ट्रांसफर प्राइस एडजस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड, दिस इज बिकॉज अ यूके टैक्स एडवांटेज वुड अराइज, ठीक है। चलो वो तो हो गया। अ ट्रांजैक्शन बिटवीन जेग लिमिटेड एंड अ कंपनी विच इट कंट्रोल्स, बराबर है। And this is a resident in a non-qualifying territory, that is a territory which does not have a double tax treaty, ठीक है। तो फिर जहाँ पे डबल टैक्स ट्रीटी नहीं होती है ना, वहां पे मैं स्मॉल हो कि लार्ज हो वो मैटर ही नहीं करता, वो फिर भी डबल टैक्सेशन मेरे को चार्ज करना ही है, ऐसा है। या फिर मेरे को बेसिकली उसके लिए वो ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट करना ही है, ठीक है ना। अभी वरना है रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स। The rate of corporation tax in UK on profits of the business, UK resident companies are subject to UK corporation tax on worldwide income. The business in Puran would be a permanent establishment of MOD as opposed to being a separate legal entity. Accordingly, the profits of the business will be subject to UK corporation tax as part of the profits of MOD Limited. The rate of corporation tax suffered in the UK on the profits generated in Puran would be 12%. The corporation tax at 25%, less double tax relief of 13%. Perfect, ठीक है ना। अभी आता है एग्जेम्प्ट, इलेक्शन टू एग्जेम्प्ट दी प्रॉफिट, तो ये उन्होंने पूरा आंसर दिया हुआ है। द एडवांटेज ऑफ मेकिंग सच एन इलेक्शन वुड बी दैट प्रॉफिट्स मेड इन पुरान वुड नॉट be subject to UK corporation tax. This would save corporation tax at the rate of 12% as set out above. However, it should be recognized
that it would no longer be possible to claim capital allowances in the UK in respect of the assets purchased for use in the trade carried out in Puran. In addition, there would be no relief in the UK the event of any losses being incurred in the trade in Puran in the future. ठीक है. Once made, the election is irrevocable and would apply to all future overseas Ps of Mott Limited. Accordingly, there would be no relief in the UK for any losses incurred in any overseas Ps operated by Mott Limited. Although Mott Limited is part of a group, the election will not affect any other UK company. एक मिनट, although part of the group, the election would not affect any other UK companies within JEG Limited group, as each group company can choose whether to make an election. Basically वो PE के लिए है. हाँ, बेसिकली ये जो इरिवोकेबल है ना, ये फ्यूचर ओवरसीज पीईज ऑफ मॉट लिमिटेड है, ठीक है ना. मॉट लिमिटेड अगर कोई फ्यूचर पीई नया निकालता है इन द कंट्री ऑफ से ऑस्ट्रेलिया और वेर एवर, तो उसके लिए ये चीज इरिवोकेबल है. उसके लिए अभी अपन वो क्लेम नहीं कर सकते. अभी बेसिकली वी कैन नॉट क्लेम दी लॉसेस एंड वी आर नॉट टैक्स्ड ऑन दी प्रॉफिट्स, ऐसा है. बट फॉर अदर कंपनीज वो अपना अपना खुद का देख लेंगे, ऐसा है, ठीक है ना. चलो मैं अभी ये करते हैं क्वेश्चन नंबर बी. रिलीविंग द चार्जेबल गेन ऑन द सेल ऑफ कॉर्ड लिमिटेड बिजनेस प्रेमाइसेस. रिलीविंग द चार्जेबल गेन ऑन द सेल ऑन द, ठीक है. Explain the matters which should be brought into Hale's attention in relation to the availability of rollover relief in respect of the chargeable gain on the sale of Cord Limited's business premises and the way in which the relief would operate. So first of all हम ये बता देंगे कि which companies do get selected in the group relief group and gains group, ठीक है ना. तो जेग कॉर्ड एंड मॉट आई गेस गेट सिलेक्टेड इन द ग्रुप रिलीफ ग्रुप एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना, गेम्स ग्रुप के अंदर. अब ये क्वेश्चन भी जरा पढ़ लेते हैं. On 1st of August 2023, ठीक है, जेक परचेज द होल ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ टू कंपनीज कॉर्ड एंड लिस्ट कंपनी, ठीक है. ऑन 1st of July 2025, जेक परचेज द होल ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ मॉड मुके. तो ये देखो, इसने 1st of July 25 को लिया हुआ है. All the four companies in JEG Limited Group prepare accounts to 31st of March each year, are budgeted to be profitable in the year ending 31st of March 26 and pay corporation tax at the main rate. मैं पता है क्या बोल रहा हूँ. अभी अपन एक्सेल शीट खोल लेते हैं कि अभी अपने को आई थिंक काम करना पड़ेगा उस चीज के ऊपर. अभी अभी ये कर लेते हैं. ऑल फोर कंपनीज इन जेग लिमिटेड ग्रुप प्रिपेयर अकाउंट 31st of March, वेरी प्रॉफिट कॉर्पोरेशन एट द मेन रेट, ये सब ठीक है. अपर लिमिट लोअर लिमिट पर डिसाइड कर लेंगे क्या कि नहीं. ठीक है, जाए तो. अप्रैल मई जून तो गया, बचे 9. तो ये 9 महीने मॉड लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है ना. प्रॉफिट्स अगर जो कुछ भी रहेगा वो, ठीक है ना. इतना ध्यान रखना. अभी JEG Limited purchase of the business. On 1st of February 25, JEG purchased the trading assets of a business. The whole of the significant assets of the business was its production line, which consisted of three large items of fixed machinery. JEG Limited paid 2,90,000 for this machinery. ठीक है, मैंने 2,90,000 मशीनरी में डाले. Ford Limited is experiencing cash flow problems. On 30th of June 25, it sold its business premises to an unconnected party for 4,85,000. तो आई थिंक इसी के इसके बारे में हमको बात करनी है. रिजल्टिंग द चार्जेबल गेन ऑफ 2,47,000. दिस बिल्डिंग वाज एंटायरली यूज्ड इन कॉर्ड लिमिटेड ट्रेड थ्रू आउट द पीरियड it was owned. Cord Limited now trades from rented premises. On 1st of August 25, it used 1,20,000 of its sale proceeds to purchase 8 delivery vans for use in its trade. So AEA would be claimed. हाँ, AEA would be claimed on those purchases, ठीक है ना. प्लस दे मूवेबल चैटल है यार उसको. आई डोंट नो. हाँ, आई थिंक डिलीवरी वैन्स आर मूवेबल चैटल, उसके ऊपर नहीं क्लेम कर सकते ना रोल ओवर रिलीफ. अभी ग्रुप रोल ओवर रिलीफ कैन बी क्लेम्ड बाय ऑल द कंपनीज इन द ग्रुप, राइट.
So if one company is making the sale and the other company is purchasing the asset in exchange for it. Sorry, if one company is purchasing the asset, sorry, if one company is selling the asset and the other companies are purchasing the asset in exchange for it, then rollover relief can be claimed. However, the entire sale proceeds should be invested. ठीक है ना? अभी सेल कौन कर रहा है? कॉर्ड लिमिटेड. So how much are the sale proceeds? So therefore the sale proceeds of 4,85,000 should be reinvested somewhere else. ठीक है ना? अभी I don't think 1,20,000 invest होगा because they are movable chattels is what I feel. ठीक है. Now the period of purchasing is 1 year prior and 3 years later the date of sale. So here in this case we can say that JEG Limited purchased the trade and assets of the business. ठीक है ना? Significant business ये fixed machinery का for 2,90,000. So thus this 2,90,000 can be claimed as a rollover relief. आगे बढ़ते हैं. List company does not come in the gains group or the group relief group. एक मिनट ना, does it? No, sorry. It does come actually. It does come in the group relief group and gains group. However, problem क्या हो रहा है? However, it is based in the country of Silana and therefore rollover relief cannot be claimed for the same. ठीक है ना? Because it is मतलब it is an overseas trading company. That's why. So therefore 1,70,000 cannot be claimed और ये 1,20,000 तो जैसे मैंने बोला कि ये ए डिलीवरी वैन्स यार ये मूवेबल चैटल्स है यार. मैं वही सोच रहा हूँ मूवेबल चैटल्स आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर द बिजनेस इज व्हाट आई फील. ठीक है ना? तो आई फील ओनली दिस 2,90,000 विल बी क्लेमेबल. ठीक है ना? तो बाकी का जो है अभी कितना 1,95,000 बचा तो दिस 1,95,000 will be chargeable. 1,95,000 will be taxable immediately and the remaining 52,000 will be rolled over. Now, after rolling it over, the base cost, ठीक है ना, will reduce. So therefore, for JEG Limited, the base cost if he sells the machinery will be 2,90,000 minus 52,000, which is 2,38,000. I feel हाँ 2,38,000 होना चाहिए. Perfect. I think that's it. इतना बोल सकते हैं. डबल टैक्स रेटिंग नहीं है कोई ये नहीं है. आई फील हाँ बराबर बोला कि कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स का था लेकिन वो पता नहीं यार. आई थिंक इतना ही काफी होना चाहिए. ये मैंने फटाफट भले ही बोला है बट स्टिल चेक कर लेते हैं एक बार जरा. Availability of rollover relief. All trades carried on by members of the group of companies are treated as one trade. This means that it is possible for rollover relief or rollover a chargeable gain on the disposal of the share of the business assets by one trading member of the group against the acquisition of a replacement business asset by another trading member of the group. For rollover relief to be available, qualifying assets, that is land and buildings and or the fixed plant and machinery, must be purchased in a 4-year period commencing 1st of July 2024. 1 year period prior to the sale of the premises. एक सेकेंड हाँ बराबर है. 1 year prior to the sale of premises by quad और एनी कंपनी विच मेंबर बराबर है. ये भी परफेक्ट बोला अपन ने. क्वालिफाइंग लैंड एंड बिल्डिंग्स और फिक्स प्लांट एंड मशीनरी. हाँ वो एक लाइन है फिक्स प्लांट एंड मशीनरी. अभी क्या आता है वो रिप्लेसमेंट. द रिप्लेसमेंट एसेट्स मस्ट बी इधर ओन्ड बाय यूके रेसिडेंट कंपनी फॉर द यूज इन इट्स ट्रेड और owned by non-UK resident company or used to carry on a trade in the UK. The replacement assets must either be owned by UK resident company for the use in its trade or owned by a non-UK resident company. हाँ ट्रेड इन द यूके. हाँ वही वही इट इज ट्रेड इन द यूके. परफेक्ट. तो यहाँ पे देखो हम लोग ट्रेड यूके में कर ही नहीं रहे हैं वो लिस्ट कंपनी का. इसलिए हम लोग वो लिस्ट कंपनी का जो 1 लाख मतलब वो 70 था वो हम ले नहीं पाए. ठीक है ना? अब आगे जेग लिमिटेड कैपिटल गेन्स ग्रुप. जेग लिमिटेड कैपिटल गेन्स ग्रुप. जेग लिमिटेड ऑन ऑल ऑफ द सब्सिडरीज. ठीक है ना? दिस इज बिकॉज जेग ओन्स एटलीस्ट 75% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ऑल ऑफ दी सब्सिडीज. परफेक्ट.
अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो, रिव्यू ऑफ द एसेट्स, द वैन परचेज बाय कॉर्ड लिमिटेड आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट्स बिकॉज दे आर मूवेबल as opposed to fixed. Perfect. The items of machinery purchased by JEG Limited will, however, qualify for rollover relief because they are fixed. Perfect. Although Liz Company is a member of the JEG Limited Capital Gains Group, the building which it purchased on 1st of July 25 is not a qualifying asset for the purposes of rollover relief. This is because this company is not a UK resident company and building is not being used to carry on trade in the UK. Perfect. Actually building का कहाँ पे था एक्चुअली, एक सेकंड ना। हाँ ये एक्चुअली अपन ने बोला था, यस यस यस, वी सेड दिस कि दिस कंपनी इज नॉट, मतलब इट इज अ कंपनी सिचुएटेड इन, मतलब इन ओवरसीज एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी, मतलब वो कैनॉट बी क्लेम फॉर रोल ओवर रिलीफ, ऐसा। ठीक है ना। अभी ये देखो रोल ओवर रिलीफ के बारे में, इफ द आइटम्स ऑफ द मशीनरी परचेज बाय जेग लिमिटेड आर ओनली क्वालिफाइंग एसेट्स द परचेज, एक मिनट, qualifying assets purchased during the qualifying period, it will not be possible to roll over the whole of the chargeable gain on the sale of Cord Limited's business premises. The amount of proceeds not reinvested in qualifying assets of 1,95,000 will be charged to corporation tax. The remainder of the chargeable gain on the sale of the business premises is 52,000 could be deferred until the earliest of the following events in relation to machinery purchased by JEG Limited. ठीक है ना। The sale of machinery, the machinery no longer being used for the purposes of the trade, and 10 years after the डेट ऑफ द परचेज ऑफ द मशीनरी। तो हाँ, ये अपन ने 52,000 डेफर तो बराबर हुआ था, लेकिन डेफर्ड अंटिल व्हाट डेट वो अपन ने नहीं हुआ था। वो अपने को यहाँ पे बोलना है। देखो हम लोग अगर बिजनेस प्रेमाइसेस बेच रहे हैं तो फिर बेसिकली हम लोग एक क्या बोलते हैं, नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट बेच रहे हैं, और हम एक डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीद रहे हैं मशीनरी का। तो इसके वजह से वो 52,000 डिफर हो रहा है टिल द अर्लीस्ट ऑफ व्हेन वी सेल द मशीनरी, when we stop using machinery in our trade, and third वाला है 10 years after the date of the purchase। ठीक है ना। नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट परचेज बिफोर विजुअलाइजेशन डेफर्ड गेन। परफेक्ट, फाइन। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट भी, तो बी सी ए बी सी डी हो गया। ठीक है ना, चलो। The last question, E. Hale's financial position for the tax year 25-26. Hale cannot understand why, despite receiving a substantial amount of UK source of income, her annual personal expenditure is 57,600, exceeds her available post-tax income. Prepare calculations of the tax year 25-26 in order to explain why Hale is in the financial position and summarize your findings. क्या? ठीक है, देखते हैं क्या पूछा गया है। उसकी ग्रॉस एनुअल सैलरी इतनी है। Hale, I have personal background. I was born in the UK and have always lived in the UK. Income from employment in the tax year 25-26. On 6th of April 25, I began working full time for JEG Limited। ठीक है। ग्रॉस पैकेज है कुछ तो है, अभी कितना है इसमें ग्रॉस एनुअल सैलरी है 87,800 की। एम्प्लॉयमेंट इनकम बेनिफिट्स जो इसको हो रहे हैं in respect of car and accommodation amounting to 26,230, 7,200 ordinary shares issued to me by JEG Limited. 7,200 ordinary shares issued to me by JEG Limited on 1st of May 2025 as an introductory thank you for joining the company. I paid 14,400 of these shares, which had a market value of 23,200 at that time. तो इसने कितने भरे थे बेसिकली, जितने भरे थे इसने, एज गुड एज 27, एक मिनट, 20,200 के लिए 0.8, नहीं इसने 80% से भी कम भरे थे, तो ये सही स्कीम है कि नहीं पता नहीं, बट वही दिक्कत है। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय योर मैनेजर, शेयर्स इन जेग लिमिटेड आर नॉट रेडीली कन्वर्टेबल एसेट्स।
You should assume that here will have a dividend income of 18,300 in the tax year. ठीक है। तो आ, ठीक है, मतलब मैं समझा नहीं अब तो मुझे यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका पहले पोस्ट टैक्स इनकम ही निकाल देते, क्योंकि उन्होंने वही बोला है कि मेरा मेरा कि मैं इतना पोस्ट टैक्स इनकम क्यों एक्सीड कर रहा है, बेसिकली ऐसा इन्होंने पूछा है। मैं ई पार्ट के लिए डायरेक्टली सिर्फ एक्सेल यूज कर रहा हूँ, काफी वेird लग रहा है। लेस पी ए जीरो। ठीक है। टैक्सेबल इनकम 37,700। 37,700 इन 125,140, 125,140 एंड अबाव 140 माइनस 37,700। एक्चुअली यू नो व्हाट, वेट वेट वेट, हाँ, वेट अ सेकेंड। ऐसे नहीं होगा। पता है क्या होगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस पे, तो ये जाएगा 40% में। ठीक है। उसके बाद है ना हमारा डिविडेंड है ना यार, मैंने वो देखा ही नहीं, मैं सीधा ही मतलब वो चालू हो गया सीधा ही। रुक जाओ। पेमेंट इनकम डिविडेंड्स 5140। 33.75%, 39.35%। ठीक है, आई थिंक ये हो गया। समेशन दिस। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका टोटल टैक्स पेएबल। पोस्ट टैक्स इनकम, तो ये हो गया दिस माइनस दिस। ये हो गया पोस्ट टैक्स इनकम।
अभी इसका एनुअल पर्सनल एक्सपेंडिचर इतना है, ये बोल रही है, जो इसको कम पड़ रहा है। मैं क्या बोलूँ, इसको डिविडेंड इनकम मिला कब है? टैक्स 25-26 में मिला है, मेरे को भी 25-26 का ही निकालना है। He Hale cannot understand why, despite having substantial amount of tax, UK source income, her personal expenditure 57,600 exceeds her available post tax income। कहाँ एक्सीड कर रहा है? पर ये एक्सीड तो कर ही नहीं रहा है। मेरा पोस्ट टैक्स इनकम 87,847 का है, जबकि मैंने शेयर्स खरीदे। चलो मैंने अगर शेयर्स वाले भी मैंने अगर इसमें से कम करे तो ही मेरे पास 73,000 बचता है। तो फिर मैं 73,000 अगर बचता है तो फिर मैं मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरा 57,600 कैसे एक्सीड कर रहा है भाई। प्रिपेयर कैलकुलेशन फॉर द टैक्स एट 25-26 इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाई हेल इज इन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड समराइज योर फाइंडिंग्स। भाई कैसे, भाई कैसे, मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रहा है एक्चुअली। वो नहीं समझ आ रहा है ये। नहीं भाई, ये नहीं समझ में आ रहा, बाद में कर दे अभी इसको। आई फिर आई जस्ट चेक द आंसर। इट इज नॉट एक्सीडिंग एट ऑल यार। ये देखो, इन्होंने डिविडेंड को पहली बात तो कंसिडर किया ही नहीं। क्यों नहीं कंसिडर किया भाई? मैं नहीं, डिविडेंड को कंसिडर किया है तो फिर टैक्सेबल ये एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कहाँ गए भाई? एक सेकेंड। एम्प्लॉयमेंट इनकम बेनिफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कार एंड अकोमोडेशन अमाउंटिंग टू 26,230, ये कहाँ है भाई? फिर why have they not included this? Credit was also available to candidates who identified that on the assumption that Hale will have no purchase reduced। भाई इसका लॉजिक क्या है लेकिन, कि तुमने इसको इंक्लूड ही नहीं किया है? ये रहा बेनिफिट्स, शेयर्स, ठीक है, उसने शेयर्स का भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। ओके फाइन, तो उन्होंने शेयर्स का मतलब बेसिकली बेनिफिट इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, शेयर्स, शेयर्स का मुझे कितना मिलता है बेनिफिट? बेसिकली 23,200 माइनस 14,400, इतना आता है। ठीक है, तो मेरा ये आ जाता है। ओ अब मैं समझा, अब मैं समझा। ओ फक भाई, बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं कि आपके इन हैंड आपके पास कितना है? इन हैंड कैश या इन हैंड इनकम बेसिकली। अरे ये जो मुझे बेनिफिट्स मिले हैं, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और ये शेयर्स के बेनिफिट्स, ये मुझे कैश में थोड़ी मिले हैं। शी इज आस्किंग मी कि भाई मेरे पास पैसे जो आ रहे हैं वो मेरे बच क्यों नहीं रहे हैं? बच इसलिए नहीं रहे हैं बिकॉज मेरे को 87,800, ठीक है, प्लस डिविडेंड इतना इतना ही अमाउंट मिल रहा है। लेकिन जो मेरे को टैक्स भरना पड़ रहा है ना, वो टैक्स मेरे को हायर वैल्यू पे भरना पड़ रहा है। ये हो रहा है सीन, ठीक है ना? तो पहली बात तो एक काम कर ले, ये 500 तो आएगा ही। एक मिनट ना। ठीक है ना? तो मुझे इतना देखो, मुझे इतना मुझे टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, हमेशा मुझे इतना टैक्स, ये मेरा अमाउंट बराबर रहेगा पहली बात तो, दिस इज, हाँ बराबर है। ठीक है, ये मेरा टैक्स आता है। तो मेरे पास पोस्ट टैक्स इनकम इन हैंड, हाँ ये देखो, पोस्ट टैक्स इनकम इन हैंड मेरे पास 57,605 की बच रही है। ओके, ये थोड़ा वियर्ड अमाउंट आया, मतलब 5 रुपए ही आया है मेरे पास। बट ये भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में यही रहेगा मेरा। देख लो, 48,495, 48,495 परफेक्ट टैक्स अमाउंट बिल्कुल सही आया। फिर ऑब्वियसली क्लास 1 एनआईसी अगर आप कंसिडर करके जाओगे, इनकम टैक्स एंड देन क्लास 1 एम्प्लॉई एनआईसी। तो क्लास 1 एम्प्लॉई एनआईसी मुझे कितना आएगा बेसिकली? फिर अगर आप वो माइनस करोगे तो आपका ये पोस्ट टैक्स इन हैंड वाला इनकम और कम हो जाएगा।
सो दैट्स द लॉजिक कि भाई मेरे पास हाथ में कितना बच रहा है, क्योंकि ये देखो ये जो टैक्सेबल बेनिफिट्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कार और अकोमोडेशन में, ये मेरे पास हाथ में कैश नहीं आ रहा है ना, मेरे पास इन जनरल कैश है, लाइक ऐसा है वो फिगर, समझे ना? दैट्स द होल लॉजिक ऑफ इट। ठीक है, अब मैं समझा। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। क्लास 1 एम्प्लॉय NIC 12570 पे 0%, 37,700 पे 8%, दिस माइनस दिस 2%, तो ये आ जाता है दिस एंड दिस। ठीक है, पोस्ट टैक्स इनकम तो देखो, इसके पास जो पोस्ट टैक्स इनकम है इतना है, इसका इतना है, लेकिन इसका पर्सनल एक्सपेंडिचर 57,600 का है। राइट, अब समझा, क्योंकि उसके पास इन हैंड कैश नहीं। फाइन, आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला, एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को मिला। फाइन, आई थिंक द लास्ट पार्ट वाज द ओनली वन वेयर वी मेड अ मेजर एरर। बाकी सब थ्योरी था तो काफी स्मूथली निकल गया एक्चुअली। इस 9 मार्क्स में से एक्चुअली 7 या 6 मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे।